Good morning, team. Mahindra holiday yesterday was in CNBC. So we have posted the link in our Telegram channel. So Mahindra holiday has said that this quarter, the occupancy ratio will be 85%. And even their European operation is going very good and EBITDA positive will be seen there. And he is saying even for Q1 FY24, the advance booking is at 85%. So occupancy also will be more than 85% is what Mr. Kavinder Singh, MD and CEO of Mahindra Holiday has said. And this is very positive. I think Mahindra Holiday and Indian Hotel are two companies where results can be very positive. Today, Election Commission will announce schedule of Karnataka State Assembly poll at 11:30. Yesterday, Ken, there is a magazine or a paid magazine called Ken. They came with a detailed report on Adani Group and the disconnect on what Adani is announcing that they are repaying their loans and other things. But in reality, the pledge is not getting released. So after which Adani stock has corrected, the management has come and clarified. But when in doubt, it is better to stay away. So it is safer to stay away because there are too many conflicts on what is happening there. And we also do not understand. So it is better to stay away. Granules India has received ANDA approval for Gepaplatin tablets. PNB Housing has announced 2,500 crore rights issue at 275 rupees. This is 43% discount. The rights issue date will be from 13th April to 27th April. And it is for every 54 share held, you can apply for 29 shares. Piramal Pharma also has proposed to issue rights issue to equity shareholder at 1,050 crores. It is a proposal. It is not yet fruitified. NHPC board has approved 5,600 crore corporate bond term loan or ECB. So very soon they will come to market to borrow. RIH Magnesia board has approved raising 200 crore via preferential issues. So RHI Magnesia is something we like also. SML Isuzu hikes prices of truck model up to 4%, bus model up to 6%. From 1st April 2023, every truck or four-wheeler also, there is an increase in prices. South Indian Bank MD and CEO Mr. Murli Ramakrishnan will not offer himself for reappointment from the current term, which ends in September 2023. This is negative for the stock. He has turned around the company in a very big way. And that is why South Indian Bank has rallied very good. So now this is likely to be negative. Commerce Minister has said goods and services export to cross $760 billion in FY23. And now I was reading a SEBI order on few front running. Apex Food is one company where SEBI has issued an order of insider trading. This order was for trading done in 2017, which is almost 6 years back, where the promoters have bought their shares when there was some information. So there is an order passed. If you want, I can share the order. But we need to be very careful with stocks where corporate governance issues are raised. Hindustan HFCL backs order worth 282 crores for Surat Metro Rail project from Gujarat Metro Rail for telecom systems in the thing. NBCC has one order worth of 146 crore. 46 crore in West Bengal, 100 crores for SIDBI building, Pan India. TCPL Packaging has invested 8.5 crore in subsidiary company through rights issue to enhance mobile box manufacturing. They see a lot of demand emerging from that. Andhra Sugars has informed 100 tons per day caustic soda plant
which has started production in Sangada. The enhanced capacity now stands at 600 tons per day. TRIL, transformers and rectifiers, has got an order worth of 184 crore. So the total outstanding order is 1,555 crores. Apotex has informed that expansion plan for manufacturing nitrile latex has been commissioned at Walia, Gujarat. So it is an expansion plan. Gujarat government has allotted 39,600 megawatt of domestic solar PV module manufacturing capacity to 11 companies with an outlay of 14,007 crores. This is very positive for solar manufacturer. So SW Solar and Tata Power will be something which will benefit from India. So there are other companies also. Dr. Moopan family increases 4% stake in Aster DM Healthcare, buying shares for 460 crores from large PE investors. Now the family holds a stake of 41.88%. So this is positive for Aster DM, but we don't track the stock. Royal Orchid Hotel Randanga has launched 5 new projects across India: Vadodara, Jhansi, Mohali, Greater Noida, and few other places. And more than 108 rooms will be opened in this. Very positive for Royal Orchid Hotel. We are also positive on this. In Yes Bank, we are awaiting an order from High Court regarding this 81 bond, where if the judgment comes positive for the 81 bonds bondholder, it is going to be negative for the shareholder. 8,415 crores is the value. So this has to be paid. That has to be, Yes Bank has to reverse that thing. So that means it is going to be 8,415 crores of loss to Yes Bank. So we have been very negative on Yes Bank. So we remained negative. So kindly avoid these kind of stock. V2 Retail has opened one store in Bareilly, UP, which becomes 102nd store of the company. Muthoot got board approval for prepay ECB worth 550 million, which is due on September 2nd, 2023. Last news, GR Infra has emerged L1 bidder for 2 projects. One is bypass road in Belagavi, Karnataka, 897 crores, where it will be from appointed date, it will be 912 days for building and 15 years from the completion of the project for operation. And Belgaum, Raishur, Karnataka, it is again a HAM project, 716 crores, 730 days for completion from appointed date, and from completion 15 years they can manage the thing. With that, over to you, team, retail team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. फर्स्ट अपडेट जो है वो है टाटा एलेक्स के ऊपर. कंपनी ने जो अल्पाइन कंपनी है उन्होंने टाटा एलेक्स को चूज किया है. जापानीज मैन्युफैक्चरर जो व्हीकल सिस्टम है उन्होंने वो एस्टैब्लिश करेंगे ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर टाटा एलेक्स के कैंपस में त्रिवेंद्रपुरम में. और ये सेंटर है बेसिकली फोकस करेंगे सॉफ्टवेयर लेड इनोवेशन पे, इंजीनियरिंग जो सपोर्ट करेगा अल्पाइन्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए. और ये टाटा एलेक्स के लिए पॉजिटिव है क्योंकि उनका जो फ्यूचर ग्रोथ है पार्टनरशिप के दौरान जो बेसिकली टाटा एलेक्स का जो रेवेन्यू है इंजीनियरिंग सेगमेंट से वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 85% टोटल रेवेन्यू के हिसाब से. तो ये पार्टनरशिप टाटा एलेक्स के लिए अच्छी है. द नेक्स्ट अपडेट है एलटीआई माइंडट्रेक के ऊपर. कंपनी ने स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग पार्टनर हेल्कनिक बैंक है, उन्होंने एलटीआई माइंडट्री को चूज किया है उनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए. ये पार्टनरशिप के साथ एलटीआई माइंडट्री बैंक को हेल्प करेंगे ट्रांसफॉर्म जो उनका कोर बिजनेस है और उनका जो इम्प्रूव है डेटा एनालिटिक्स और उनका जो एक्सेलेंस
प्रोसेस एक्सेलेंस इम्प्लीमेंटेशन करेगी। तो ये पॉजिटिव अपडेट है और कंपनी ने बोला है कि ये जो डील है बैंकिंग स्पेस में वो मैनेज करेगी कंपनी और उनको हेल्प करेगी कंपनी उनका जो एस्पिरेशन है 15% ग्रोथ CAGR वो अचीव करने के लिए। और करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से और टारगेट प्राइस है वो 5000 रुपीज है। कोफोज है उसके ऊपर इनिशिएटिव कवरेज हम लोगों ने रिपोर्ट रिलीज किया है। तो करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से, टारगेट प्राइस है 4356। कंपनी का जो प्रेजेंस है वो नीश सब वर्टिकल्स में है, BFS, इंश्योरेंस, TTH एंड कंसिस्टेंट कंपनी डील्स जो है उनको मिल रही है और उनका जो एडमिशन रेट है वो लोअर है और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है PS के कंपैरिजन में वो डिस्टिंक्शन है हो रहा है। और उनका जो अभी नवी एडवेंट न्यू CEO है उनका जो परफॉर्मेंस है वो हाईली इम्प्रूव मतलब है। तो उनका जो रजिस्टर्ड रेवेन्यू CAGR है वो 17% से है एंड 130 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट है EBIT मार्जिन में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22 में। करंटली कंपनी के पास जो 9 मंथ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक है ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए अराउंड $841 मिलियन और जो इंडिकेट्स करता है कि उनकी जो विजिबिलिटी है वो 20% रेवेन्यू ग्रोथ की है नेक्स्ट 12 मंथ्स में। देन नेक्स्ट अपडेट है मोल्टेक पैकेजिंग के ऊपर। मोल्टेक पैकेजिंग ने अनाउंस किया कि उनका जो कैपेसिटी एडिशन है 2000 मेट्रिक टन पर एनम का वो कैपेक्स के साथ 40 करोड़ के। तो उनकी जो न्यू फैसिलिटी है वो कैटर करेंगी FMCG एंड फार्मा सेगमेंट और ये कैपेक्स जो है फंडेड होगा मोस्टली इंटरनल एक्रूअल से। और ये जो कैपेसिटी है रफली 5% उनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके अनुसार है। और तो ये बेसिकली उनका जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज करेंगी कंपनी का, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और ये इसके साथ पैकेजिंग स्पेस में स्टॉक्स जो है वो अभी फेयरली वैल्यू प्राइस पे है और उनका हम लोग फर्दर जो गाइडेंस है कैपेसिटी एडिशन का उसका हम लोग वेट करेंगे नियर टर्म में। करंटली लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो 1208 है। देन ABB इंडिया है उन्होंने बोला है कि वो सप्लाई करेंगे न्यूमलग्र रिफाइनरी लिमिटेड है उनको इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सॉल्यूशन जो मॉनिटर और मैनेज करेंगे 130 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप है जो इंक्लूड करेगा बेसिकली इंस्टॉल करेगा ABB कैपेबिलिटी, स्कैड एडवांटेज, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स एंड लीक डिटेक्शन सिस्टम। सो ओवरऑल उनका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा एक्सेस एश्योरेंस उन्होंने दिया है हाई डिग्री सेफ्टी के साथ और पाइपलाइन का जो नेटवर्क है उसकी एफिशिएंसी के साथ। तो ये पॉजिटिव है ABB इंडिया के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है NTPC के ऊपर। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी है वो सप्लाई करेंगे 1300 मेगावाट राउंड द क्लॉक क्लीन पावर ग्रीनो को। अपकमिंग ग्रीन एल्यूमिनियम प्लांट है काकड़िया में वहां पे। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है वेदांता के ऊपर। वेदांता ने फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया 20.5 पर इक्विटी शेयर। और नेक्स्ट अपडेट है महिंद्रा हॉलीडेज के ऊपर। हम लोगों ने महिंद्रा हॉलीडेज जो उनके जो MD CEO थे वो CNBC पे उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उसकी जो लिंक है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट की है ग्रुप में। तो उन्होंने बोला है कि फोर्थ क्वार्टर का हम लोग ओवरऑल एक्यूपेंसी रेशियो देखे तो अराउंड 85% है और उनका जो यूरोपियन ऑपरेशन है वो काफी अच्छे से चल रहा है। और कंपनी ने अपडेट किया कि उनका जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 है उसकी एडवांस बुकिंग अराउंड 85% है। तो अभी जो एक्यूपेंसी रेशियो उससे भी ज्यादा एक्यूपेंसी रेशियो कंसिस्टेंटली मेंटेन होगा। तो ये स्पेस में हम लोग इंडियन होटल और महिंद्रा हॉलीडेज के ऊपर पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो और स्लोली स्लोली लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट अपडेट है अदानी ग्रुप के ऊपर। अदानी ग्रुप को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि उनका जो कल एक डिसलेमन परफॉर्मेंस था ब्रोशर और अमिड अनरिलीज प्लेस शेयर है उसके ऊपर एक अपडेट आया है। उनके जो अदानी ग्रुप के जो CFO है उन्होंने बोला है कि ये रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि कंपनी का जो March 7 से लेके 12 के अनाउंसमेंट में जो है वो मैच नहीं हो रहा है इंफॉर्मेशन जो है स्टॉक एक्सचेंज पे और जो डेलिबरेटली मिस प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये स्टॉक को हम लोग इस पे बहुत सारी न्यूज फ्लो है और ये न्यूज फ्लो निगेटिव है तो स्टॉक को हम लोग को अवॉइड करना है। काइंडली अदानी ग्रुप रिलेटेड स्टॉक है उसको अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट अपडेट है ग्रैन्यूल्स के ऊपर। ग्रैन्यूल्स इंडिया को US FDA से एंड
ANDA से नॉड मिला है गैपेटिन टैबलेट्स के लिए, जो बेसिकली यूज होती है मैनेजमेंट पोस्ट पैथोरेटिक न्यूरोलॉजी अडल्ट्स में, उसके लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ने अप्रूव किया है राइट इशू 2494 करोड़ का। कंपनी का प्लान है कि वो इशू करेंगे 90.68 मिलियन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, और उसकी जो प्राइसिंग है वो 275 है। और इसके लिए कंपनी ने राइट इशू का जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन होगा अप्रैल 13 से लेके अप्रैल 27 के टाइम फ्रेम में। देन नेक्स्ट अपडेट है एनएचपीसी के ऊपर। एनएचपीसी जो कंपनी है उनके बोर्ड ने अप्रूव किया है जो डेप्थ है उनका अप टू अराउंड 5600 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो ये अब रेज करेंगे इशुएंस ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड और रिडीमेबल नॉन कम्युलेटिव नॉन कन्वर्टेबल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वन ट्रैंके में और मोर ट्रैंकेज में। देन नेक्स्ट अपडेट है जिम आरएच मैग्नीशिया के ऊपर। कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने उनकी जो शेड्यूल मीट है सैटरडे को अप्रैल 1 को, जो बेसिकली रेज करेंगे फंड्स प्रेफरेंशियल इशू से, और इक्विटी शेयर्स अराउंड होगा 200 करोड़। देन नेक्स्ट अपडेट है साउथ इंडियन बैंक है, उनके जो सीईओ एमडी है उन्होंने रीअपॉइंट नहीं किया है, तो ये एक नेगेटिव अपडेट है। देन HFCL जो कंपनी है उनको ऑर्डर मिला है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, और उसकी जो वर्थ है वो 282.61 करोड़ की है। देन एप्टॉक्स करके कंपनी है, उनका जो एक्सटेंशन प्लान है उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में सेटअप करेंगे। देन गुजरात गवर्नमेंट ने सोलर मॉड्यूल के लिए 11 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देने का सोचा है, तो मोस्टली ये सेगमेंट में SWS सोलर और टाटा पावर जैसे स्टॉक को फायदा हो सकता है। देन डॉक्टर मोपेन है, उन्होंने एस्टर डीएम हेल्थ केयर में उनका स्टेक रेज किया है, अभी उनका स्टेक है 41.88%, बट ये कंपनी अभी हम लोग ट्रैक नहीं करते। द नेक्स्ट अपडेट है रॉयल ऑर्किड जो होटल है वो 5 न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया में, और अभी उनका 110 न्यू रूम्स हो गए, तो हम लोग पॉजिटिव है ये स्टॉक के ऊपर। यस बैंक वेट कर रहा है उनका जो ऑर्डर है उसके लिए। जो बॉन्ड होल्डर्स है ये अपडेट उनके लिए निगेटिव है, क्योंकि मतलब जो शेयर होल्डर है बेसिकली उनके लिए तो ये निगेटिव है, तो काइंडली यस बैंक को भी अवॉइड करना है। Technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was slight decline in the Nifty index, and Nifty was down by 34 points to close at 16,951. So looking at the chart pattern, what we can observe is on the 28th March, we have seen a swing low at 16,828. After that, the index is moving sideways. So looking at the chart, I believe the 16,800 will be held for maybe next couple of days, and we should be seeing a bounce towards 17,100, 17,200. That's the range for the market, 16,800 to 17,200, and 16,800 should be held is what I believe. So for the day specific, today being a monthly expiry and looking at the yesterday's closing hour trade, I think the Nifty might close near 17,000 level. So this is a cash levels. So 16,950, maybe 50 points plus is what I expect the Nifty to be closing. Largely, the index is trading in that range until and unless we don't move out of the 16,800 on the lower side or 17,200 on the higher side. There will not be a major trend on the either side. So we need to wait and watch as long as we are trading in this range. For the day specific, 17,000 is what I think we should be testing. Coming to Bank Nifty was positive in yesterday's session, close to 136 points, closing at 39,567. So majorly the ICICI Bank, IndusInd Bank and HDFC Bank were the counters which added strength to this Bank Nifty. So if I look at the chart pattern, Bank Nifty, the immediate trading range for the Bank Nifty is 39,000 and 40,000. So even today, I expect Bank Nifty to be positive by 150 points on the higher side. So there is a likely chances Bank Nifty might come close to 39,800. This is a cash levels again, and the close might come close to 39,800. So the view should be positive for the day. Though largely the major support for the Bank Nifty comes at 38,500, and on the higher side 41,500 is a resistance. So this is the larger range for the Bank Nifty, but
somehow the bank Nifty is more strong as compared to Nifty. So I think today, if the market holds, the bank Nifty will be heading to a 39,800 is what I feel. Coming to derivatives data, there were Nifty futures has seen a long unwinding in yesterday's session to the tune of minus 2.07%, which was a decrease of 0.35 million shares. The put call ratio was down from 0.85 to 0.80, which has added a little bit of weakness. The major call addition was seen as 17,000 strike price and 17,100. So that will act as a resistance. On the put front, 17,000 and 16,800. So that should act as a support. Coming to Bank Nifty has seen a short covering in yesterday's session to the tune of minus 2.43%, which was a decrease of 0.14 million share. The put call ratio was up from 0.6, sorry, from 0.76 to 0.91. So that has added strength to the Bank Nifty. The major call addition was seen at 40,000 strike price and the put option at 39,500 strike price. So that will act as a support. So largely, I believe we should have a flat kind of session, flat to slightly positive. So we'll be trading for the long ideas. There are two stocks which are looking very good for the next couple of trading sessions. One is IndusInd Bank. At current price, I think IndusInd Bank has a potential to move towards 1100, 1150 on the upside. So anybody who's taking a 5-6 days, 1 week kind of a trading move can initiate a long in IndusInd Bank. Another one is JK Cement. JK Cement, the current price is 2,844. The stock is right now consolidating in a very strong range, and it is suggesting that 2750, 2780 will be a base on the lower side. I expect a trading bounce in the counter, so maybe 2950, 3000 can be the near-term target for the counter. So we do keep a watch on both of the counters, and we'll see what is the rollover in today's session. And accordingly, we form the sectoral view for the next coming month. That's all from me. I'll hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Hi, good morning, team. So, firstly, on Tata Elxsi. So, Tata Elxsi has been chosen by Albine, a Japanese manufacturer of vehicle systems, to establish global engineering center at the Tata Elxsi campus in Thiruvananthapuram. So, this will be positive because this center will focus on software-led innovation and engineering, which will support Alpine's future growth. Then on LTI Mindtree. So LTI Mindtree has been chosen as strategic sourcing partner by Helen Singh Bank for its transformation journey, where the bank will transform. LTIM will help bank to transform its core business and improve data analytics and process execution implementations. So overall positive. Then we have initiated coverage on Coforge. We came up with a report yesterday. We have valued the stock at 22 times FY25. Now the company's presence in niche sectors like sub-verticals of BFSI and TTH, consistent deal wins and lower attrition, and even client concentration is lower, is what distinguishes itself from peers. And we expect revenue and profit to grow by 16% and 21% CAGR over FY23 to 25. So, and we have a buy rating on the stock. Then on Moltech, so Moltech Packaging has announced a capacity addition of 2,000 metric tons with capex of 440 crores, and this will be like 5% more to its capacity, and obviously its order book has increased with that, so it's positive for the company. And lastly, on ABB, so ABB India has supplied Numaligarh refinery with integrated automation and control solutions to manage and monitor a 130-kilometer cross-border oil pipeline, which is between India and Bangladesh. So this is positive for ABB. Only the issue with ABB always has been the stock always remains expensive. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. Let's continue with further updates, starting with Jindal Stainless. Jindal Stainless has picked up the 49% stake in Indonesian metals company, that is New Yakin Pte. This deal is about 157 million, that is amounts to 233 crore. They said this JV will allow JSL to invest and develop and construct the nickel pig iron smelter facility located in the industrial park of Halmira Island, that is in Indonesia. And this unit is likely to be commissioned within 2 years with an annual nameplate production capacity of 2 lakh metric ton.
Secondly, NTPC Renewable Energy will supply 1,300 megawatt of round the clock clean energy to Greenco's upcoming green ammonia plant in Kakinada. And this is NTPC Renewable is a wholly owned subsidiary of this. And on March 2023, the supply of 39 megawatt of clock RE power to the powering Greenco's upcoming green ammonia. In a statement, they said this agreement will also bring the two companies to the world's single largest contracts of supply of round-the-clock renewable energy. Next is Vedanta is going to declare some dividend of 20.5 rupees per equity share, and this amounts to be 7,621, and the date has been fixed to 7th April 2023. Reliance Industries and Tata Solar and Renew are among the companies to be chosen for the 14,007 crore worth of government incentives to encourage the local manufacturing of solar PV modules under its production link PLI scheme. And overall, Solar Energy Corporation, the state and energy will also implement the national solar mission that has allocated 38,600 megawatts to capacity of 11 companies. Power Ministry also said that the totaling 7,400 megawatt is expected to become operational by October 2024, and while 16,800 capacity would be ready by April 2025. Lastly, on Adani News, the Adani News has given a clarification that Adani Enterprise, with reference to a report yesterday, it has said it has paid a debt of $2.15 billion. And yesterday we had seen a little bit of rout in this stock, so we had come this a clarification of that.